रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudaan.com। गुड मॉर्निंग मुंबई। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है आपकी आवाज हर किसी को मंत्र मुग्ध कर सकती है? अगर हाँ, तो बस लॉग ऑन करें www.radioudaan.com पर और आज ही खुद को रजिस्टर करें, क्योंकि आरजे हंट सीजन 3 की सफलता के बाद रेडियो उड़ान लेकर आया है आरजे हंट सीजन 4, जिसमें विजेताओं को मिलेगा 10,000, 5100 और 3100 का नगद प्राइज और साथ ही रेडियो उड़ान के साथ काम करने का मौका। आज ही खुद को रजिस्टर करें और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जून है, तो फिर देर किस बात की? आज ही विजिट करें www.radioudaan.com पर और खुद को रजिस्टर करें। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। जुलाई महीने से नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का 6th एडिशन आ रहा है। हर 3 साल बाद ये सर्वे होता है, लेकिन इस बार सरप्राइजिंग बात यह है कि जो NHFS के 5th एडिशन में डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। होना तो ये चाहिए था कि जो पिछली बार क्वेश्चंस थे उसमें और इम्प्रूवमेंट लाई जाती, लेकिन इस बार उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया है। समझ नहीं आता है कि कब तक डिसेबिलिटी सेक्टर अपने राइट्स को लेके लड़ता रहेगा। जो चीजें नहीं आती हैं उनके लिए तो लड़ना पड़ता ही है, लेकिन जो चीजें पहले से होती हैं उसको भी मॉडिफाई कर दिया जाता है और उसके लिए भी लड़ना पड़ता है। इस पर हम डिटेल्ड बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, जानेंगे कि सरकार की आखिर मंशा है क्या, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, क्या गवर्नमेंट मानेगी, डिसेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस को ऐड किया जाएगा। इन सब पर डिटेल्ड बात करने के लिए हमारे पास पूरा पैनल है। आइए इनसे आपका तारुफ करवाते हैं और आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। We have well-known disability right activists who will share their insights on the subject, and we'll also get to know what is this all about, why it is important for a disability sector. So we have 5 people in this discussion. We'll have a discussion and we'll try to figure out how we can get disability related questions in this survey. I welcome everyone. We have Smitha ma'am. Smitha ma'am is well-known disability right activist. She is leading from the front on this campaign and she always fights for our rights. Smitha ma'am, welcome. Thank you, Danish. We have Vaishnavi ma'am. She is well-known disability right activist. You people heard her. You see her presence everywhere on almost all disability related issues. Vaishnavi ma'am, welcome. Hi, thanks for having me. We have Rama ma'am. Rama ma'am, disability right activist. She is working hard to get this questionnaire in this survey. Rama ma'am, welcome. Thank you, Danish. We have Priya ma'am. She has studied on this subject and will definitely have her insights and we'll get to know why this survey is very important for us. Priya ma'am, welcome. Last but not least, we have Arman sir. Everybody knows about his work. He's from NCPDP. Arman sir, welcome. शुक्रिया दानिश। तो अरमान सर, क्योंकि आपको जाना है, कुछ आपकी और भी मीटिंग्स है, तो पहले आपके ओपनिंग कमेंट चाहूंगा इस सब्जेक्ट पे। नहीं, बहुत ही अफसोस की बात है कि NHFS में जो 5th एडिशन था उसमें डिसेबिलिटी थी और इस बार आखिरी मौके पे उसको निकाल दिया गया है। और इस विषय पे ज्यादा तो स्मिता और मेरे जो बाकी साथी हैं वो बताएंगे। काफी समय से उस पे वो काम कर रहे हैं और बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपको 2-4 चीज ऐसी बताना चाहूंगा कि आज हम सभी देख रहे हैं कि जो उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इस ट्रेन एक्सीडेंट में काफी लोगों की जान गई, कितने लोग डिसेबल्ड हो गए हैं और इनको क्या सहायता चाहिए होगी आगे अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए, उसका कोई पॉलिसी नहीं है। उस दिन एक जम्मू एंड कश्मीर में किसी व्यक्ति को उग्रवादियों ने गोली मार दी। उसके फादर और उसके भाई दोनों को विजुअल इम्पेयरमेंट है, ब्लाइंड है उनके फादर, और छोटे भाई को भी लो विजन है। अब वो फैमिली कैसे चलेगी, उसके लिए भी कोई पॉलिसी नहीं है। और क्राइम अभी दिल्ली में भी हुआ जिसमें मदर डॉटर का मर्डर हो गया, डॉटर ऑटिस्टिक थी। तो आप देखिए डिसेबिलिटी को हम कहाँ नहीं देख रहे हैं और कितना कुछ करने को है डिसेबिलिटी में। जहां आज सरकार गाइडलाइंस निकाल रही है कि हर हेल्थ केयर सर्विस
प्राइवेट हो या पब्लिक हो, एकदम डिस्ट्रिक्ट और एक ब्लॉक लेवल तक एक्सेसिबल होना चाहिए, उसका गाइडलाइंस आ रहे हैं। और एक तरफ आप जब सबसे एक भारतवर्ष में एक सबसे सेंसस के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक सर्वे है, उसमें से आप डिसेबिलिटी को जब निकाल देते हैं बिना कोई खास वजह के, तो फिर आप खुद सोचते हैं कि हम पॉलिसीज क्या कर रहे हैं, हम डिसेबल लोगों को क्यों एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह देख रहे हैं कि आफ्टर थॉट ही रहेगा कि जब कोई मौका ऐसा आएगा जहां लोग हल्ला करेंगे तो उनको थोड़ा 500 रुपए का पेंशन दे देंगे। ये अप्रोच बदलने वाला नहीं है। आने वाले समय में इस चीज का आभास होता है और बहुत ही अफसोस की बात है, मतलब, और इससे काफी नाराज है पूरी सेक्टर। और आई थिंक कहने को अब शब्द नहीं है। आई डोंट थिंक, मतलब, इतने लोगों ने, हजारों लोगों ने इसको अपनी आवाज बुलंद की है, पिटिशंस भेजे हैं, और सरकार, जब अभी हम सेंसस की तरफ जा रहे हैं, सेंसस होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में या एक साल में, और ये अगर हमारा अप्रोच रहा, इफ यू कंटिन्यू टू लुक एट डिसेबिलिटी एज एन आफ्टर थॉट, सब कुछ हो जाने के बाद कुछ व्हील चेयर्स और हेयरिंग एड और मोबाइल फोन बांट देंगे तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो इस सदी में जहां हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, जहां हम वर्ल्ड लीडर्स होने की बात करते हैं और डिसेबल्ड लोगों को हम नहीं इंक्लूड करेंगे, तो आने वाला जनरेशन भी ऐसे ही सफर करेगा जैसे हम कर रहे हैं अभी। सर, दो चीजें मुझे बताएं। एक तो एनसीपीडीपी इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, अभी तक क्या हमने हासिल किया है, क्या अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? एक कोalition है, तो लीड कर रही है स्मिता, वैष्णवी, रमा, प्रिया, इसको लीड कर रहे हैं, और एनसीपीडीपी और भी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है। वी आर सपोर्टिंग एज एन एलआई, एज ए सॉलिडारिटी, जिसकी जो जितनी क्षमता है और जो भी अपना गुडविल है जो हम इस्तेमाल कर पाते हैं उसको करते हैं। बट रियली द इनिशिएटिव हैज बीन लेड बाय स्मिता, रमा एंड अदर्स। तो जैसे कुछ भी सेक्रेटरियल सपोर्ट हो या कुछ भी करना हो, तो दैट इज व्हाट एनसीपीडीपी इज डूइंग, एंड लाइक अदर्स आर आल्सो डूइंग एट देयर ओन लेवल। तो इट्स अ कोलिटिव कोलिशन वर्क। यस, एक चीज और बताएं, लंबे अरसे से आप इस सेक्टर में हैं, आपने बताया कि एनएचएफएस में 5th एडिशन में ये था क्वेश्चनियर, अब ड्रॉप कर दिया है। इसके पीछे क्या माइंडसेट रहता है? सिर्फ 2 क्वेश्चन थे पिछली बार डिसेबिलिटी से रिलेटेड। गवर्नमेंट क्या हासिल करना चाहती है कि इन क्वेश्चंस को ड्रॉप करके? क्या माइंडसेट आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? तो एक ना, मुझे लगता है ये मेरी थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा व्यक्तिगत मेरा ओपिनियन भी है कि एक विकलांगता को लेके बहुत ही कम जागरूकता है विकलांग व्यक्ति और उनके परिवार के बीच में भी, और एक स्टिग्मा भी है कि लोग आगे बढ़ के नहीं बताते अपने आप को कि मैं विकलांग हूं, मेरी आइडेंटिटी वही है, और इस कारणवश शायद जिस तरीके के रिस्पॉन्स चाहिए होते हैं वो एन्यूमरेटर भी नहीं पूछ पाता है, और पूछने पर भी लोग बताते भी नहीं है, और इस कारणवश शायद जिस मात्रा में इनको आंकड़े चाहिए वो आंकड़ा आता नहीं है। और इनका ये कहना है सरकार का कि इनके पास जो आंकड़े आए, इट डिड नॉट मेक एनी सेंस, कुछ ऐसा हम कुछ, मतलब, पूरे स्टडी में उसका हम मतलब नहीं निकाल पाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब इस तरीके की समस्या है तो देश में ये चाहिए कि जो हमारे लीडर हैं, जो सरकारें हैं, वो और तेजी से काम करें और जागरूकता लाएं। जब अमेरिका जैसे देश में 12 से 15% लोग विकलांग है, सरकारी आंकड़ा कहता है, तो हमारे देश में ऐसी क्या हमने कर दिया है कि हमारे यहाँ विकलांग लोग नहीं मिलते, उनका डेटा नहीं आता है? तो आई थिंक इट्स अ कंसर्न, एक चिंता का विषय है। और एक जैसे स्वच्छ भारत अभियान आपने किया, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, और कई भी चीजें कर सरकार बहुत तेजी से डिजिटल इंडिया और इस तरीके की चीज की, तो कैसे बदलेगा ये सिनेरियो विदाउट इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी इन एवरीथिंग दैट यू डू, और क्रिएटिंग ए मास मिशन मोड अवेयरनेस कैंपेन। तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई वुड फील, एंड मुझे लगता है इसी पे कुछ करने की जरूरत है। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, इंडिविजुअल्स कैसे अपना रोल अदा कर सकते हैं? क्या हमें करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े और ये डिसेबिलिटी रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको दोबारा ऐड किया जाए? जैसे स्मिता, वैष्णवी, सबका जो इनिशिएटिव है, पत्र लिखे, ईमेल लिखे, अपने एरिया में, अपने मंत्रालय में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लाइक एमपी हो, एमएलए हो, या मिनिस्ट्री हो, या सरकार में या कोई डिपार्टमेंट हो, उसमें याचिका दे, अपना पिटिशन भेजे, चिट्ठी भेजे, और आपस में बात करें, कलेक्टिव हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े,
और आगे बढ़ के आए और अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी ताकि सही जगह पहुंचे और इंक्लूड हो डिसेबिलिटी किसी भी चीज में, किसी भी विषय में। अगर ये क्वेश्चनियर नहीं आता है उससे कम्युनिटी को क्या लॉस होगा? आप अगर मतलब ये क्वेश्चनर अगर कम्युनिटी को जो लॉस होगा अगर नहीं आता है, तो अगर ये सर्वे नहीं होता तो देश को क्या लॉस होगा? वही लॉस होगा जिससे लोगों को जो करोड़ों विकलांग लोग हैं उनको जानबूझ के पीछे छोड़ दिया जाएगा कि किसी की दया के पात्र आप रहे और आपके लिए सिर्फ नाम बदले जाएंगे कि आप विकलांग नहीं, आप दिव्यांग हैं, और एक बस टर्मिनोलॉजी बदल देने से कि लोगों की जिंदगियां नहीं बदलती हैं, ये बात हकीकत हो जाएगी। Thank you, Arman sir. Thank you so much for sharing your viewpoint. Thank you so much. So I'll continue the discussion with other panelists. Arman sir, he has given his perspective. He has put it in a right way to tell us what is going on in the sector and why it is important. Smitha ma'am, your opening comment. Let's start with the opening comments and then we'll continue the discussion. Great. Thank you very much, Danish. Actually, I would like to give a brief history on the inclusion of disability in the health sector, in the health domain itself. Like, it is not just about the National Family Health Survey that we are worried about, but the disability sector have been working very intensively for the past 1 year. The representatives from the disability domain have been trying to meet the health officials, different departments of health officials. We have been meeting and we have been approaching the disability department also based on the inclusive health services for people with disabilities. And all these things started, the movement started with the Ministry of Health releasing the draft on the healthcare accessibility standards. We all had multiple discussions, all of us sent our inputs, and so from there onwards it started, and we have been following through that, and then we started looking at the different programs under the health ministry, and we saw that disability is very barely mentioned, whereas there are numerous programs and all brilliant programs are being coming up. And so we started, asking the health ministry, why not include us into these discussions, and why not have disability representatives in your committees? Why not have all the services accessible? And, when you are releasing this draft on healthcare accessibility standards, why not consult people ourselves who are the primary stakeholders? And so that is how it all started, the push from the disability sector upon the health ministry. And we have been having periodic consultations, periodic meetings with them. But, they have been giving us hope, but nothing really worked out. So then we started Disability Rights India Foundation, fixed up meetings, and we had consecutive discussions, and have been pushing 3-point agenda. One is data, the other one is capacity building, and third is access. So these, at least you look at these 3 focus areas for people with disabilities in all the health programs. So this is what we have been, asking them and giving them more supporting evidence. And towards supporting evidence, Priya did an elaborative study on the data aspect, and that is how we came into the NFHS. She did a good study on NFHS 5, and then we found that there is a question on disability in NFHS 5, and whereas the question is only about asking, does your family have a person with disability? And if yes, what is the disability? So this is not enough. We need to improvise on the questions, and we started, asking for that with the disability department, DEP, WD, and also the health ministry, NHSRC, and the DGHS, additional DGHS himself. So, multiple officials we have been approaching with regard to NFHS, and it came as a shock when even in April, when we had met the disability department, and they said, yes, we will work on improvising the disability questions in NFHS. And in early May, we come to know that the question is dropped totally in NFHS 6. It is really shocking. So, this is how we are in the situation
where we are right now. And then the movement picked up strong advocacy on writing letters and everybody trying to approach the health minister, the disability department. But, we are yet to get a positive response or even a response from the health ministry. Really sad. Priya ma'am, can you share some insights of your study with your opening comments, please? Yeah, are you able to hear me? Yes. Yeah. Actually, हमारा जो स्टडी था, we started sometime after the first lockdown in 2020. Me and Rama felt we were just talking about it one day, and we realized how difficult it would be for a person with disability to access health services during these times, and what are the things lacking, and how it can be highlighted. That is how we started the study. That was basic idea. Then we started developing our questionnaire. The questionnaire broadly talks about the physical infrastructure in a hospital, the services, whether the people with disabilities are able to access it, how well they are able to access it, and what is the attitude of the doctors and other staff in the hospital. That was our study. And the second phase of it was the desk research or secondary data research, where I studied all the policy schemes of the Health Ministry, Government of India, and not surprising at all, but still very disheartening in the sense that very disappointing that none of the policies and schemes and programs, including the flagship programs like National Health Program or National Rural Health Program, Urban Health Program, does not have any provisions for people with disabilities. People with disabilities are just a cursory mention in the list of vulnerable people. That's all. Policy makers, including the 2017 health policy, does not talk about people with disabilities and their needs. These people do not realize that people with disabilities have needs, specific needs. Those needs to be addressed at the policy stage. The policies, the programs, the schemes, everything is bereft of any provision for people with disabilities. Now coming to National Health Survey 5, बहुत ही शानदार तरीके से जब आप रिपोर्ट की स्टेट बाय स्टेट एनालिसिस पढ़ेंगे तो हर एक इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि NHFS 5 में डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है, लेकिन जब हमने स्टेट वाइज डाटा देखा उसमें एक भी स्टेट में डिसेबिलिटी इंडिकेटर इंक्लूडेड नहीं था, ना ही कोई डाटा था. अगर इंडिकेटर होगा तो ना डाटा होगा. तो none of the states talked about disabilities. None of these states had any even single indicator on disability. So how are they talking about inclusion of disability in NFHS 5 जब एक भी इंडिकेटर नहीं बना? तो इसी को जब हमने आगे जाके देखा तो फिर जब इंडिकेटर ही नहीं था लेकिन क्वेश्चन था. क्वेश्चन 4 तरीके के क्वेश्चन हैं NFHS 5 में, लेकिन उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है, दैट इज योर हाउस होल्ड क्वेश्चनर हैज अ क्वेश्चन ऑन डिसेबिलिटी, जिसमें जैसे स्मिता ने बोला कि देयर आर 2 क्वेश्चंस. वन इज do you have any household member with disability, and if so, if yes, what is his or her disability? इसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पे. तो हमें फिलहाल सिर्फ ये पता चलेगा कि क्या प्रिविलेंस है डिसेबिलिटी का थ्रू आउट इंडिया, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा. राइट. और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज का ये मानना है कि जब फैमिली प्लानिंग की बात आती है या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात आती है, जब मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात आती है,
जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते हो, these have nothing to do with disability, people with disabilities. मतलब उनका और इन हेल्थ एंड फैमिली इश्यूज में कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ यही जानना काफी है कि एक परिवार में क्या विकलांग व्यक्ति है और है तो किस विकलांगता को बिलोंग करता है, बस। इस बार तो वो भी ड्रॉप कर दिया ना, मेरे को तो ये वो समझ भी नहीं ड्रॉप आता। कर दिया। जबकि सबसे हाँ बोलिए। जबकि जैसे अरमान सर ने कहा कि हर चीज हेल्थ की डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। कोई दुर्घटना होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, तो पहला इम्पैक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे आता है। कोई डिसेबल्ड हो जाता है, चाहे वो रेल दुर्घटना हो, कोई युद्ध हो, और फिर भी वाई गवर्नमेंट इज सो इनसेंसिटिव दैट दे आर नॉट इवन इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी वर्ड। तो हमारा यही कैंपेन वहीं से शुरू हुआ था। मी एंड स्मिता मेट द डिसेबिलिटी सेक्रेटरी, वी मेट DGHS, असिस्टेंट DGHS, और उन सब ने बहुत होप दिया था हमें, बहुत ही पॉजिटिव ढंग से बात किया था। इनफैक्ट एक ने तो ये भी कहा था, लेट अस हैव अ डायलॉग विद द NGO सेक्टर एंड द गवर्नमेंट एंड लेट अस नो ईच अदर एंड दैट प्रोबेबली विल नो you better and will understand you better, but it didn't go any further. Disability secretary in fact said, अगर आप हमसे और सवाल इंक्लूड करने के लिए बोलते हैं इस क्वेश्चनर में, तो बाकी जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो भी मांग करेंगी, तो इसका अंत कहाँ पे होगा। तो हमने जवाब दिया कि ये हम तो इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। तो फिर उसका कोई ढंग का जवाब नहीं आया जी। बट यही था कि हाँ, उन्होंने कहा कि आप सवाल दीजिए, हम सोचेंगे, बट इसके बियॉन्ड वो गया नहीं। द शॉकर वॉज आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन when we got to know from our sources that disability question has been dropped altogether, and the reason being that data authentic नहीं था। उनको ये करना चाहिए था कि अगर ऑथेंटिक भी नहीं था तो उसको देखते हुए अगले सर्वे में उसको और थोड़ा बेहतर करते, बट दे सीम्स टू बी नॉट इंटरेस्टेड। Essentially, I feel a lot of people feel disability is a very complicated issue, इसलिए इसको दूर रखो, which is a very, very wrong thing that they all do. And what disappoints me more is disability department attitude, because they should be standing up for us, but वो करते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना सर्वे करेंगे, which is wrong. Inclusion should be the motto now. Absolutely, yes, and you have rightly pointed out the disability department should stand up, and we have seen in most of the cases that individual disability right activists or organizations are fighting, which supposed to be fight by the disability department. Then why we need of disability department if all the time individuals has to stand up and fight against? Yes. रमा मैम, थोड़ा सा लेमैन की दृष्टि से समझाएं हमारे लिसनर्स को इस सर्वे की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इतना इस पे फोकस कर रहे हैं अपने ओपनिंग कमेंट्स के साथ। ओके, लेमैन के अंडरस्टैंडिंग में, अच्छा, एक SDG करके है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये बना था 2015 में। इसमें ये कहा गया, ये पूरा UN ने बनाया था और इसमें कई कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने साइन ये किया कि हम गरीबी हटाएंगे। 17 ऐसे गोल्स हैं। हम गरीबी हटाएंगे कंप्लीटली, हंगर हटा देंगे, एजुकेशन फॉर ऑल देंगे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देंगे, एम्प्लॉयमेंट। इसमें कई चीजें हैं जो 17 गोल्स में कमिट किया था कि इंडिया भी अचीव करेगी इसको बाय 2030। 15 ईयर्स के टाइम में ये 17 गोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल ये अचीव होगा। ये जो SDGs है, इसका जो प्राइमरी ये था कि ये इसका प्रिंसिपल था लीव नो वन बिहाइंड, और इसमें एक बहुत जरूरी था डेटा कलेक्ट करेंगे। ये नहीं बताएंगे, जैसे पहले SDG से पहले मिलेनियल डेवलपमेंट गोल था, वहां पे कहा गया कि हमने गरीबी को हाफ कर दिया है, लेकिन ये नहीं पता चला किस कम्युनिटी के लिए हाफ किया है। क्या दलितों में भी वो हाफ हुआ है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में भी हाफ हुआ है। तो MDGs
जो था वो 2015 से पहले था। 2015 में जब SDGs आया, उन्होंने कहा हम ऐसे डेटा नहीं देंगे कि भाई हमने गरीबी आधा कर दिया है, हम ये डेटा देंगे कि किस किस कम्युनिटी के लिए क्या किया है। जैसे अगर पॉवर्टी पे कोई डेटा होगा तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कितना होगा, या और वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए क्या डेटा होगा। तो ये डेटा और डिसएग्रीगेटेड डेटा पे बड़ा फोकस है SDGs का। और ये जो NFHS है, सिर्फ NHFS के क्वेश्चनर को अगर आप देखेंगे, सिर्फ हेल्थ नहीं है उसमें कई चीजें हैं क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग एजुकेशनल लेवल, सैनिटेशन। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जिसमें ये पूरा डेटा जो एनालाइज कर रहे हैं उसके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करके वो जो डेटा स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल सेक्शन के डेटा को लेने के लिए, वहां पे ये बताया गया कि पहले हमारा जो एक्सेस टू सैनिटेशन जो था वो 30% था, अब NFHS 5 के डेटा के बेसिस पे अब 70% हो गया है। तो हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छी रही हैं, हमने एक्सेस टू सैनिटेशन 30% से 70% कर लिया है। तो NFHS डेटा जो है ये कई चीजों पे वो फोकस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं हमारी पॉलिसीज जो है वो काम कर रही है या नहीं काम कर रहा है, कुछ बदलाव लाना है। तो ये वाला जो पॉलिसी मेकिंग है उसके लिए ये डेटा जो है बहुत यूजफुल पाया गया है फॉर एवरी एस्पेक्ट। तो ये इसलिए जरूरी है। इवन डोमेस्टिक वायलेंस पे क्वेश्चन है, ऑन डोमेस्टिक वायलेंस पे क्वेश्चन है, लाइवलीहुड पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंक्लूड हुए हैं। about 1000 questions are included in NFHS। ये 1000 पॉइंट्स पे डिसेबिलिटी का कितना प्रोग्रेस है, पीपल विद डिसेबिलिटीज का कितना प्रोग्रेस है, ये हमें NFHS स्टडी से पता चल सकता था। यस, ड्रॉप हो गया है। इनफैक्ट जो हमारा फोकस था जब हमने मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट किया था, जब स्मिता ने, प्रिया ने सब कनेक्ट किया था, तो हमारा ये था कि अब NFHS 5 में तो इंक्लूडेड था, NFHS 6 में कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चनरी नहीं, लेकिन ट्रेनिंग ऑफ द एन्यूमरेटर्स, इवन अवेयरनेस अमंग द फैमिलीज, ये सब हम कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये वाला डिस्कशन के साथ हमारा फोकस रहा था। ये हमने कभी नहीं सोचा कि ये क्वेश्चन ही ड्रॉप हो जाएगा। So that was a shock. Exactly. So I don't know whether I was able to explain, but that is the importance of National Family Health Survey. Yeah, you have put it beautifully. Vaishnavi ma'am, your opening remark please, and two things. When we say there was no indicators, if I have to understand for my listeners what are the indicators we suggest, and Smitha ma'am said, so we were focusing on 3 core areas like capacity building, data, and third one, I think it was access. Yes. So can you elaborate a bit more for our listeners, and how do you see this omission of questions? So essentially, I'm kind of surprised that this relationship between disability and the NFHS has not occurred even before NFHS 5. So for almost 2 decades, the country's premier and, quite practically speaking, only comprehensive health survey, which is supposed to guide policy, was silent on the matter of disability. Until NFHS 5, in which it was included on the request of the Ministry of Social Justice and Empowerment. Now, what seems to have happened at that point of time, I have no idea who guided them, because one must remember that this NFHS has its base in something called a demographic and health survey template. Now, this is a global template which most countries use, so that data from different countries can be compared with each other. So you can kind of look at where you stand globally. Now, instead of following the module which is already present for disability in this DHF, they have instead created their own questions, which are very inadequate and probably not
phrased properly and not tested the way in which the DHS questions were, which kind of channel the Washington group method of seeking difficulty in functioning, whether it is seeing, hearing, etc. Now, that was mistake number one. Mistake number two is thinking that that whatever this survey's results are, that it is not giving you the kind of information that you want, and therefore, for a matter of your preference for a particular kind of information, you therefore decide to drop it because it is quote unquote useless. Now, why have people thought this way? It's because where both the NSSO and the census have have disability prevalence at around 2 and a bit. This NFHS gave disability prevalence of only 1. And according to the data, even the kind of within the disabilities, it was not matching well with what the census and the NSSO data was like. Now, to me, this is India. We have so many problems, we have so many people, and I refuse to believe that any activity, any kind of intention, any kind of work is so reliant on what data tells you that you will stop all your work and wait for the data to inform you. It is impossible to function like that. We need to do our work, and as and when the disability data informs our work, we need to rope that in and build on our work. Now, to say that, it gave only 1% disability prevalence and that is of no use to us, and therefore we have dropped the question, is so incredibly blinkered in its thinking that I'm amazed, because as far as where I'm coming from, for me, you cannot have a national family health survey. Now, this is by itself, it's saying national and it is saying health. It is already leaving out people in institutions, people who are homeless, people who are migrants, etc., and focusing only on family. Doesn't matter. That's the way it is. It's still the most comprehensive health survey around. But it is a national survey and it is health. It is not saying a national health survey of non-disabled people or of a particular, kind of people. And in ignoring the disability as a characteristic of a population, something that people will have, some people will not yet have, and to drop something out of your survey simply because it's not giving you the quantity that you want, a figure which will kind of give you the thing of, oh, we're this many percent. Everybody knows that the disability prevalence is 15%. We need to be planning our focus and our interventions based on that 15%. This is just a way in which we are gauging whether people's acceptance of their disabilities and recognizing that what they are facing is a disability, and this is what the measure of it is, for starters. And by closing the door on that, we are, simply blanking out the possibility and blocking out a key feature of what makes us human. Now, what if I next go and drop, like, suppose, imagine a demographic survey in which I decide to drop gender. Why is it that we are not looking at this as kind of a given, that there should be no dispute about including, facets of what disability status of a person is? It should be as much as a given as age or gender or sex, as it matters. And a lot of people have said perhaps that one of the reasons why a survey or a questionnaire is successful is if it's not too long. We had 2 questions. Even if you make that 6 questions, there's so many ridiculous questions in the NFHS which make absolutely no sense whatsoever, that I could really list some of them. They are mind-boggling.
And to claim that, you have no, kind of space, it is already more than 1,000 questions in your questionnaire, and therefore you are dropping disability, or because disability is only 1%, is to negate an important characteristic of a population. And therefore, the NFHS will not be a complete survey. It will have gaping holes by the omission of characteristic features of a population like disability. Perfect. And I think now, when I saw the attitude of this government towards persons with disability, we should change the slogan, everything about us, without us. They never consult. We have seen many times their approach is pathetic towards persons with disability. Smitha ma'am, now kindly elaborate a bit more. One argument is coming, Vaishnavi ma'am also shed light and kindly elaborate. One was my first question, elaborate a bit on your 3-point agenda, access, capacity building and data. And second thing, one argument is coming from the government side. See, we are coming up with the census. So we will have a proper data in census. Why do you need in NHFS? So elaborate a bit more. And third question, what to do now? Yeah, thank you very much, Danish. With regard to those 3 key, when we looked into the policies and programs under the health ministry, and these 3 key aspects are lacking. And when we, listed a lot of requirements, and the NHSRC and also the health ministry was like, don't give us so many demands, but give us the core aspects or a few action points which we can take up. So what we did is we immediately at that meeting itself with NHSRC, access is very, very important for not only people with disabilities, but for elderly people or pregnant women or anybody with an ailment, with any temporary disability, and many more. So access, and with access we also need the capacity building of the health workforce, how to deal with people with disabilities, how to behave, and to follow the disability etiquette, so that they also should have the appropriate knowledge about disability, all the 21 disabilities, so that they know who need what kind of reasonable accommodation and what kind of support system, and all those support systems are provided in the hospital setting or any other healthcare setting. And the primary base of all these policy reforms depends on data. So that is why we started giving this 3-point agenda with the NHSRC and the health ministry, and also we pushed it with the disability department. Like Arman said, why should NFHS, when census is there, why does the health ministry need NFHS? Like that, disability need to be included in all the policies and programs and all the data processes. Sustainable development goals, as Rama said, is insisting on data on all the 17 goals. And disability should be included in all the relevant, all the SDGs actually. And there are targets, there are these indicators where disability should be a part, and how can that be gauged if there is no data? So disability data should be part of all the data exercises that is coming under the health ministry or any other ministry, and specifically Niti Aayog. So definitely there is no looking back saying yes, census is anyway there, you drop this. And census also had faced a lot of issues. Earlier when census introduced disability question, and they also had the same kind of an argument, like it is very small data and minuscule data, and we are not able to process it, and they were also about to drop it. Then the disability movement, Javed Abidi, everybody stood forward and strengthened the disability question. That is how we have the detailed question that we are having today in census. So this is not a reason, an answer
for not having a disability question in NFHS. And the principal statistician in NFHS was also mentioning like the enumerators are not doctors, and they can't gauge assess the disability, and so we need disability cards and everything. This is all absurd. The census doesn't ask for disability card, like disability certificate. Similarly, everything should be self declaration, and even election commission's disability profile is also self declaration, right? You fill a voter ID card and voter form, which is where you mention your disability, and you don't produce the disability certificate or census disability certificate. Similarly, the disability certificate cannot be demanded in any of the data processes. So that is a sure thing which everybody are saying, and the entire disability sector is sure of that, and demand that no disability certificate should be asked for any of these processes. And what next? Yes, we are trying to meet with the health minister, with the disability, with the social welfare minister, and we have been trying to gather support from the disability as well as the other sectors, the social sectors. People from across the country and even abroad have supported us, have endorsed our letter to health minister. Overnight, we got 2,000 plus signatures. So we have been trying to come up with media articles, and we will be pushing more of media attention, and also try to get an appointment, get this discussion going with the government, so that they understand this in a right way and take an appropriate decision. More power to you, ma'am. At the time when most of the big organizations are sleeping, you people are taking this cause forward. Not only this one, but constantly I'm seeing on every issue you people are vibrantly fighting. But unfortunately, there is a sector which is, with the big names and big organizations are sleeping. Priya ma'am, आपके हिसाब से what should we do now? कैसे लोगों को इस मोमेंट से जुड़ना चाहिए, कैसे गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाहिए? और एक हमारे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे लिसनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताएं, जब आप बात कर रही थी इंडिकेटर्स होने चाहिए, वो इंडिकेटर क्या मतलब है आपका इंडिकेटर से, वो भी बताएं, और क्या ग्राउंड पे हमें इनफ सपोर्ट मिल रही है लोगों से? पहला सवाल कि क्या होना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड. आई होप मीडिया जैसे आप या मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, इसमें अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले तो आई मीन इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. अगर हम लोगों को समझा सके कि ये सर्वे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड गेट अक्रॉस द पॉइंट दैट disability inclusion is very important. Whatever the survey may be coming out of government of India, सब सर्वे में disability included होना चाहिए. तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया की सपोर्ट की ज़रूरत होगी. अगर कोई नॉन डिसेबिलिटी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वुमेन्स राइट में जो काम कर रहे हैं या चिल्ड्रन में, बच्चों के अधिकार में, तो उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि वो आगे आए और हमें सपोर्ट करें, बिकॉज दिस इज जस्ट नॉट अबाउट डिसेबिलिटी, दिस इज अबाउट इंक्लूशन. और इसलिए हम सबको इररिस्पेक्टिव ऑफ विच area, which cause we are working, we should come together and we should ask the government to work for us. Secondly, your question was what is indicator? Indicator essentially हमें
ये बताता है कि हमने क्या प्रोग्रेस किया या क्या बदलाव आया। जैसे आपका अगर आप कहेंगे कि मेटरनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आज हम मेटरनल डेथ में अगर हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप कहेंगे कि इस एरिया में हम बेहतर कर रहे हैं, तो वो इंडिकेटर आपको मतलब हाउ डू आई पुट इट, इट इज लाइक incident of maternal deaths in the country, incident of child or death at during childbirth. ये सब होता है इंडिकेटर with regard to improvement or in women's health and in child health. It is indicative of our health of the society or health of a particular section of the society. So these are basically हमें इन सब के प्रिवलेंस रेट हमें जानना बहुत जरूरी है, हमें इन सब के परसेंटेजेस जानना बहुत जरूरी है, तभी हम सबको सब डिवाइड करते हैं ताकि हमें पता चले कि इस सेक्टर में इस सेक्शन में इस वल्नरेबल ग्रुप में कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है. So these are the indicators. These I mean the indicators. Right. I mean the indicators. रमा मैम, ओवरनाइट स्मिता मैम ने बताया कि 2000 से ज्यादा सिग्नेचर आए. कॉन्स्टेंटली आप लोगों की बात चल रही है डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में, हेल्थ मिनिस्ट्री को आप अप्रोच कर रहे हैं. क्या लगता है कि क्या हमारी बात सुनी जाएगी? क्योंकि हमारे पास अब लगभग 1 महीने का समय है. क्या गवर्नमेंट हमें सुनेगी? कितना मुश्किल होता है इस टाइम पे फाइट करना, और फाइट करने के बाद भी रिजल्ट्स ना आना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या इंडिविजुअल डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट के लिए, और आपके हिसाब से अब कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये कहना मुश्किल है कि सुनेगी नहीं सुनेगी, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट हम अपना पूरा फाइट पूरी तरह से करें. वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. हम एटलीस्ट कोशिश तो हमें हमारी पूरी तरह, ये हो सकता है लोग सोच सकते हैं 1 महीना है, ट्रेनिंग भी हो चुका है, अब कैसे चेंज होगा, लेकिन मुझे लग रहा है चेंज करना है तो कर सकते हैं. बिकॉज इतना बड़ा सर्वे है और इतनी बड़ी जो बात है पर्सन विद डिसेबिलिटी जो निकाल दी गई है, एक्चुअली उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं. ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अब हमने जुलाई सोच लिया तो जुलाई ही करना है. अगर अगस्त भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी बात सुने कोई, आई थिंक ये जो होगा, जो चेंज आएगा, ये मिनिस्टीरियल लेवल पे होगा या प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे अगर हमारी पहुंच हो सकती है, तो अगर वो बात हमारी समझ जाए तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड हो सकते हैं. और यही हमारी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट हम आखिर तक डेफिनेटली लड़ें. ये जो हो रहा है बिल्कुल ही गलत हो रहा है कि डिसेबिलिटी का पूरा ही ड्रॉप कर देना, क्योंकि जो एक्सेस टू हेल्थ है, हेल्थ नीड्स फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, हेल्थ ही नहीं, मैं ऐसे कह रही थी कि आप इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे, इसमें कई इंडिकेटर्स हैं हेल्थ के अलावा भी. जैसे मैंने बोला, एक्सेस टू, कितने लोगों को एक्सेस टू टॉयलेट्स है, कितने लोगों, हाउ मेनी विमेन और मेन हु आर मैरिड, और फॉर दैट मैटर एजुकेशनल स्टेटस की कितनी एजुकेशनल स्टेटस है, फैमिली प्लानिंग को लेके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, कई ऐसे इम्पोर्टेंट, डोमेस्टिक वायलेंस. तो मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी को यहाँ पे निकालना एक बहुत बड़ा इट्स अ बिग इश्यू. अगर ये समझ आ जाए तो ये ऐड जरूर हो सकता है. दैट इज व्हाट वुड बी द एफर्ट ऑफ द डिसेबिलिटी सेक्टर. ये अच्छी बात है कि सारे लोग एटलीस्ट डिसेबिलिटी सेक्टर में साथ आ रहे हैं. ये नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई वो काम कर रहा है, सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसको आगे बढ़ा रहे हैं. लेट्स सी वेयर डू वी रीच. राइट. एंड दैट्स व्हाट मैं जितने लोग सुन रहे हैं, आई वुड से दैट इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए और सबको शामिल होना चाहिए, ये कहने के लिए कि डिसेबिलिटी जो है आप NFHS 6 में जरूर इंक्लूड करें.
Perfect. Vaishnavi ma'am, your closing comment. And most of the even other political parties who are not ruling, they are with the approach they are getting together. Are we reaching out to opposition to put pressure on the government? And this is not a very big demand. It was there in NHFS 5. So why are you omitting this? And how would you request people to join this movement? Yeah, so Danesh, like we said, there was a certain amount of unhappiness with the question that was asked earlier, and that still remains because it left out many disabilities, even though it was conducted after the 2016 Act came into place. So our initial ask has been that okay, let us work with you on kind of making a more inclusive question on disability in future NFHS, but for now at least restore the question that you already have for the sake of continuity, and we will work on a better question for the next one. That itself, speaking to we reached out to a member of the technical advisory committee which made this decision, and for anything and everything the response has been like you pointed out, that okay, you already have an NFHO, so why don't you do that. Just recently when this appeal was sent out, someone has responded saying ICMR intends doing a questionnaire on disability and assistive technology. Very good. I mean, why does getting an NSSO to do a specific theme survey detract in any way from a health survey? I mean, do disabled people not fall ill? Are our conditions completely disconnected from health conditions in all ways? And barring the question on disability itself, there are so many other facets which, when going through the NFHS questionnaire, could see bringing in disability over there, and even that we suggested to the technical and advisory committee member, saying, like there is this question on why a child is not going to school, a child under the age of XYZ. And, there is a whole list. There's something like 8 or 9 options which you have to choose from. And we suggested, at least, why don't you also add disability as a result of, as one of the options to choose for the reason for the child not going to school. And even in that, they were like, asked that in a separate survey. So the separate survey nonsense answer has to be stopped, because yes, of course, there should be separate surveys. Yes, of course, there should be better representation in the census and in NSSO and in every other survey. But how can you have a health survey and call it a national family health survey and exclude the uniqueness of what a disabled person is? And that has not been addressed. We are trying any and every means, but like you have mentioned, we have less than a month left. And going by let me say that the stubbornness rather of the government of not being willing to engage further or dialogue further on this is astounding. There is I'm sad to say that it was only thanks to the disability sector's engagement with this issue that the country even found out that another very major part of the NFHS had been dropped, which is the testing for anemia. And they have come up with some kind of rationale for it, which can be easily called out. And over there, the rationale for them dropping it could be that the figures for anemia were so much higher and the government lost face, and therefore they dropped it and said that they were dealing with it in another survey. So their solution to everything seems to be that we'll drop it from here and we will cover it elsewhere. But that covering it elsewhere, they're doing in the case of anemia for a diet-based survey, etc. That's being done for the first time.
and there will be no continuity in what this NFHS has been doing right through. And I'm sad to say that, it would be relatively simple for the government to just snap its fingers and say, okay, put it back. But there is zero response even for this dropping of anemia. And I'm sad to say that at least the disability sector is being proactive. The public health sector and most of the mainstream media is not picking this up at all. And, calling out the government on this tinkering and rather tampering with a very important a survey which will give us results. Now, we may not like the results. We may wish for better quality results. But that doesn't mean that you just kind of shoot the messenger. And that's what they're doing right now with the NFHS. With anemia, the results showed that the anemia had worsened. So let's drop it and introduce it. We'll give some reason over here, introduce it elsewhere, and we will not lose face globally. And with disability, it's because, hey, we got only 1%. We're looking only for surveys in which it shows more disabilities, which I kind of understand the rationale for that, but it should not really matter. I mean, what is government for? Even if, there was some kind of experience or difficulty in which truly there were only 1% of the population being affected, that doesn't mean that their needs and considerations should not be taken into account. Like I said, we all know that it's 15%. It's just a question of this figure catching up with that figure. And for that to happen, you have to normalize asking about disability. Fine, people may not like it. If even they warn you in the questionnaire that please ask it sensitively because some people might get offended. I would rather see that, 4 years down the line that guidance to the interviewer is kind of left off because you've normalized the asking about disability and it is not something embarrassing or shameful that one has to inquire about, carefully. So as far as the other political parties and the opposition go, we are trying everything, but given the paucity of time, I think we are kind of relying on the Prime Minister's office to intervene on this matter because, quite frankly, with the amount of time that we have left, I think only a decision from the Prime Minister's office can be made quickly before the survey starts. And on that note, I'd also like to point out, now this NFHS is supposed to happen every once in 3 years. Because of COVID, NFHS 5 was disrupted and the final, kind of field visits, etc. happened in middle of 2021. Now, given that it happened in 2021, what is the point of having a full-fledged survey less than 3 years later when, even the data was released only last year? For people to even act on it or, kind of create a policy around it, it's going to take a while. Instead, from the time that the data has been released to now, it is less than a year. And what is the point of, therefore, asking the same questions when we're just going to get a lot of data back in response and not do anything about it? Because as far as other surveys go, it may be just information. But as far as the NFHS go, it's supposed to be information that guides interventions and policies. How can, we not act on that? How can we just drop certain facets of that? We are taking it way too lightly. Smitha ma'am, your closing point, please. So I just want to know in the end, Disability Department, MSJ, CCPD, can't they strongly intervene? They are there to safeguard, right, persons with disabilities' rights. And what is your closing comment? Yeah, absolutely. And so all these departments should stand with us and, intervene meaningfully and reinstate the disability questions in NFHS. We also request the Honorable Prime Minister through Badalta Daur to kindly intervene in this issue and, get the disability questions and the disability sector included in NFHS and also other health programs. As far as, the SDG motto goes, it is reach the farthest behind first.
So we request here that not to drop the fathers behind, and please include the most marginalized groups like persons with disabilities into the NFHS and other data surveys. Thank you very much. Thank you everyone. I think we covered everything, and I also request to government to reconsider and include questions related to disability in this survey, as everybody has put forward their viewpoint and rightly said why it is important for us. Thank you once again everyone for joining. More power to you. Hopefully we'll get these questions in this upcoming survey. Thank you so much. We hope so. Thank you. तो लिसनर्स, आप भी सपोर्ट करें, ट्विटर पे लिखें, गवर्नमेंट को लिखें, जो भी पिटीशंस इस ग्रुप से आ रही है DRIF से, आप उसे सपोर्ट करें। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे लिए बैंकिंग हमेशा से चैलेंज रहा है। मैं तो अपने भाइयों को ही भेज देती थी बैंक मेरा काम करवाने के लिए, और जब कहीं पैसों की जरूरत हो तो हमेशा किसी का साथ रहना जरूरी हो जाता था। लेकिन जब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट एक्टिवेट कराया है, अपनी बैंकिंग मैं खुद करती हूँ, यूनियन स्पर्श डेबिट कार्ड के साथ। इसका खास डिजाइन, जैसे कि साइड में नॉच और लेटर यू जो कि ब्रेल में एम्बॉस किया गया है, हमेशा मुझे बैंकिंग के करीब रखता है। इसकी एक खास बात बताऊं? इसमें है अपनेपन का स्पर्श। अपनेपन का स्पर्श। गुड मॉर्निंग मुंबई। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है आपकी आवाज हर किसी को मंत्र मुग्ध कर सकती है? अगर हाँ, तो बस लॉग ऑन करें www.radioudaan.com पर और आज ही खुद को रजिस्टर करें, क्योंकि आरजे हंट सीजन 3 की सफलता के बाद रेडियो उड़ान लेकर आया है आरजे हंट सीजन 4, जिसमें विजेताओं को मिलेगा 10,000, 5100 और 3100 का नगद प्राइज और साथ ही रेडियो उड़ान के साथ काम करने का मौका। आज ही खुद को रजिस्टर करें और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जून है, तो फिर देर किस बात की? आज ही विजिट करें www.radioudaan.com पर और खुद को रजिस्टर करें।